So hello, welcome back in the next video lecture where we are going to discuss regarding the force and Newton's laws. We were discussing yesterday in the video lecture that for what is force. We have discussed that force is a push or pull that change or try to change the position of a body, and then we have back to the inertia, the inherent tendency of a body by virtue of which an object at rest tends to remain at rest. An object in motion tends to remain in motion with the same speed and direction. We were discussing the application of inertia of rest, where we have discussed one application that to remove dust carpet it is beaten by a stick. अब देखिए क्या होगा, अगर आपके पास एक कारपेट है, आप इमेजिन करें और उसको स्टिक से बीट करेंगे, then what will happen? The carpet will move ahead. When we apply the force with the stick to the carpet, then the carpet will move ahead and the dust particles suspended into the pores of the carpet will remain behind due to inertia of rest. So the carpet will move forward and the dust particle will come down. So we can say that the dust particle can be removed by beating with the stick. So it is an application that from the inertia of rest that we can apply for removing the dust particle. So write down another application: to dry a wet piece of cloth. To dry a wet piece of cloth, it is shaken. It is shaken. Full stop. Cloth moves forward and the water drops stay behind. Cloth moves forward and the water drops stay behind. You might have seen at your home that while putting a wet piece of cloth for drying, that we used to give a sudden jerk to a cloth. Then what will happen? The cloth will carry the suspended water drops. छोटे छोटे water इसके pores के अंदर suspended होते हैं. When we used to give sudden jerk, then what will happen? The dust particle will throw out because of inertia of rest, and the towel or the cloth will move forward. अगर देखिए इसी को अगर आप ऐसे करके jerk देंगे, do you think that the water suspended particle will come out? No. क्योंकि अगर आप सडन जर्क देंगे तो फोर्स इतना थोड़ा होगा कि जो क्लोथ है वो सडनली मूव फॉरवर्ड होगा और सस्पेंडेड वाटर ड्रॉप्स नीचे आ जाएंगे. सो दिस इज अनदर एप्लीकेशन. राइट ऑन द नेक्स्ट वन, इनर्शिया ऑफ मोशन. सेकंड टाइप ऑफ इनर्शिया दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, इनर्शिया ऑफ मोशन. इनर्शिया ऑफ मोशन, it is the tendency of the body in motion. It is the tendency of the body in motion to continue moving with the same velocity in the same direction. The same velocity in the same direction. Just write down the application for the inertia of motion. First one, a man sitting on the horseback. A man sitting on the horseback of a running horse. A man sitting on the horseback of a running horse falls ahead when the horse stops suddenly. When the horse stops suddenly. Right, the second example, the passengers falls forward. The passengers falls forward when the moving bus stops suddenly. आप इमेजिन करें अपने आप को कि आप किसी बस में खड़े हुए हैं और वो बस चल रही है. Suddenly the brakes will apply to the bus, then where you will get fell down, forward or backward? Obviously in forward direction. Why? Because our tendency was in remaining in motion. We were in the motion, our tendency was also to remain in the motion. When we were moving in the forward direction, our legs were in the tendency to move forward and upper body was at rest. So हमारी ऊपर की बॉडी भी किस में थी? मोशन में थी और आगे जा रही थी. सडनली जब ब्रेक अप्लाई होगा तब हमारी बॉडी कहाँ जाने की कोशिश करेगी? आगे. So we will feel a jerk in forward direction. So this is two example. Right on third one, inertia of direction. Inertia of direction. It is the tendency of the body. It is the tendency of the body in motion. It is the tendency of the body in motion to continue moving in the same direction.
to continue moving in the same direction. देखिए, जिस पर्सन की जो टेंडेंसी होती है जिस डायरेक्शन में जाने की, वो उसी डायरेक्शन में जाना चाहता है। मान लीजिए आप किसी रोड पे एक शार्प टर्न लेते हैं, अगर आपकी स्पीड कम होगी, मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो रोड पे ये जो बीच में लाइन होती है, डॉटेड लाइन, इसको इस तरीके से मेजर करके बनाया जाता है कि अगर आप 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रहेंगे तो आप इस लाइन से क्रॉस कर रहे हो। अगर आपकी स्पीड कम होगी देन यू कैन इजीली मैनेज योर स्पीड। आपका we were discussing regarding the inertia of rest that अगर आपकी स्पीड कम है then you will move out through this way and you can easily take and complete the turn। लेकिन अगर आपकी स्पीड ज्यादा है तो आपकी मोशन और पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहने की टेंडेंसी भी ज्यादा होगी, इस डायरेक्शन में रहने की टेंडेंसी भी ज्यादा होगी, स्पीड ज्यादा है। So if you will be 90 km per hour then you will not able to take this turn and it will be moved to be straight forward. So you just write note down, while taking a sharp turn, the passenger feels a jerk in a particular direction. So inertia of direction is what? The tendency of body in motion to continue moving in the same direction. The tendency of the body in motion to continue moving in the same direction. चलिए नोट डाल के लिखेंगे what factor does the inertia depends. So we will mention that inertia depends on mass. किस पे डिपेंड करता है इनर्शिया? मास पे। जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। If I ask you the question that who will have the more inertia, bicycle or a train? Of course it will be a train. एक फैट मैन है एक थिन मैन है तो किसका इनर्शिया ज्यादा होगा? फैट मैन का। तो हम बोल सकते हैं जिसका मास ज्यादा है उसका इनर्शिया भी क्या होगा? ज्यादा। A 1 rupee coin or 5 rupee coin, who will have the more inertia? 5 rupee coin. A train or a bus, who will have the more inertia? A train. So you must mention, you make it down in the note that the inertia, or somebody can call it what is co-inertial factor. Co-inertial factor is mass, मतलब वो factor जिस पे inertia depend है, what is that? Mass. So inertia depends on mass. Put up the next heading, Newton's first law of motion. Newton's first law of motion. Newton's first law of motion. What is that? लिखेंगे इस पे Newton's first law states that an object at rest tends to remain at rest. An object at rest tends to remain at rest. An object in motion tends to remain in motion with same speed and direction. Until it is applied by some external force. याद रखें इनर्शिया की डेफिनेशन भी एग्जैक्टली यही थी, केवल लास्ट वाली लाइन नहीं थी उसमें। इनर्शिया में हमने क्या पढ़ा था? An object at rest tends to remain at rest, an object in motion tends to remain in motion with same speed and direction. That is known as inertia. लेकिन न्यूटन साहब ने क्या बताया कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, वो रेस्ट में रहना चाहता है। एक ऑब्जेक्ट मोशन में है, वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में विद सेम स्पीड मोशन में भी रहना चाहता है, लेकिन तब तक रहना चाहता है जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, है ना। आप लोग तो सब इंटेलिजेंट है, उस टाइम पे अगर आप लोग होते तो आई थिंक यू कैन आल्सो गेट दिस लॉ
that when does an object can changes its position. Object can changes its position when applied by some external force. So what is the Newton's first law of inertia? It is called law of inertia because it defines what is inertia. ये इनर्शिया की डेफिनेशन से लिया गया लॉ है, इसलिए इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं. दूसरा इसका डेफिनेशन क्या है? An object at rest tends to remain at rest. An object in motion tends to remain in motion with same speed and direction until it is compelled by some external force. लाइन चेंज करके आप लिखेंगे nature. This law is qualitative in nature. What does it mean of qualitative in nature? It is just giving the quality that भाई आप अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करना चाहते हैं, रेस्ट को मोशन में लेके आना चाहते हैं, मोशन को रेस्ट में लेके आना चाहते हैं, तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा. लेकिन कहीं भी इस लॉ से ये तय नहीं होता कि कितना फोर्स लगाना पड़ेगा. एक साइकिल को मोशन में लाने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, एक ट्रेन को मोशन में लाने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, एक साइकिल जो भी चल रही है उसको रेस्ट में लाने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा. It is not being given by this law. This is only giving the quality that if you wish to change the state of an object, you have to apply the force. So it is just giving the quality. So that's why this law is known as qualitative in nature. You must know that this regarding this law, what is the definition of this law. Second thing, that this law is qualitative in nature. Third one, this law is also called law of inertia. Right, now the next one, I will ask you this question. Whenever an object is in acceleration, अगर एक object acceleration में है तो किस में change हो रहा होगा? Its speed is always increasing, its velocity is always increasing, it is always falls towards the earth, a force always act on it. तो अगर कोई object, if some object is, अगर कोई object है और उसमें acceleration हो रहा है, तो इसमें से क्या बेटर है, इनमें से क्या पॉसिबल हो सकता है? उसकी स्पीड कंटिन्यूसली बढ़ रही होगी, उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली बढ़ रही होगी, और इट इज ऑलवेज फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ, और इट इज ऑलवेज अ फोर्स अप्लाइड ऑन इट. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? फोर्स अप्लाइड ऑन इट. अगर एक ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन हो रहा है, मतलब सर्टेनली उसकी पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, उसका नेचर ऑफ मोशन कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, एंड दैट इज ओनली अप्लाइड एंड इट इज ओनली अचीव्ड व्हेन इट इज अप्लाइड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स. Second question is that A and B are the two objects with masses 6 kg, 34 kg. A का mass 6 kg है, B का 34 kg है. You tell me that which among of these will have more inertia? इनमें से किसका inertia ज़्यादा होगा? Of course B का, because the inertia depends on mass. Very good. Inertia depends on mass. So let's move on to the next topic, a very important topic. You need to understand that. That is one, momentum. Momentum we need to discuss before while going to the Newton's second law. That's why we are discussing momentum. Momentum meaning the amount of motion present. The amount of motion present in a moving object. The amount of motion present in a moving object is called momentum. The amount of motion present in a moving object is called momentum. Momentum of the object. It is represented by symbol P. It is represented by symbol P and it is a vector quantity. It is represented by symbol P and it is a vector quantity. देखिए मोमेंटम दरअसल क्या है. मैंने आपसे बोला कि बेटा मैं ना चलते चलते ट्रेन से टकरा गया. आप सोच रहे होगे ट्रेन से टकरा गए तो इधर क्या कर रहे हो, हमारी जान खा रहे हो, वीडियो बना के डाल रहे हो, है ना. चल बसे होते तो कम से कम ये दिन तो नहीं देखना पड़ता. चल अब देखिए मैंने जो बोला वो गलत नहीं बोला, मैंने सही बोला. मैं चलते चलते ट्रेन से टकरा गया. भाई ट्रेन खड़ी थी, मैं चल रहा था तो ट्रेन से टकरा गया, ये अलग बात है. और मैं खड़ा होता और ट्रेन चल रही होती तो ये दूसरी बात हो जाती. सो दिस इज ओनली द मोमेंटम. कौन सी बॉडी मोशन में है? जो बॉडी मोशन में है उसका मोमेंटम, उसमें कितना मोशन प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे मोमेंटम. सो मोमेंटम बेसिकली वी फाइंड आउट, मोमेंटम वी यूज टू कॉल, मोमेंटम होता है
मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। देखिए मास तो कॉमन फैक्टर है, इस दुनिया में जो भी आया उसका कुछ ना कुछ मास है। नथिंग इज देयर व्हिच इज massless, it is always having mass. You will say air is massless, air is having also mass. तो किस पे डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी। किस पे डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी। सो द मोमेंटम इज बेसिकली डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, क्योंकि मास तो कॉमन है। तो मोमेंटम इक्वल्स टू हो गया मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम इज डिनोटेड बाय p, मास इज डिनोटेड बाय m, वेलोसिटी डिनोटेड बाय v। सो मोमेंटम का फार्मूला बन गया p इक्वल्स टू mv। वी विल गोइंग टू फाइंड आउट इट्स यूनिट। मास की यूनिट होती है kg, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। सो द SI unit of momentum is kg meter per second. You must note down. Momentum equals to mass into velocity. Momentum is represented by symbol p. So p equals to mv. Somebody asks what is momentum? मुंह पे बोलने का p equals to mv. क्या बोलेंगे? What is momentum? p equals to mv. 10 बार बोलो मेरे सामने। Momentum p equals to mv, p equals to mv, p equals to mv, p equals to mv. What is p? Momentum. What is p? Momentum. P is momentum. P equals to mv, p equals to mv. So we were discussing what is momentum. Momentum equals to p equals to mv. हम लोग बात करते हैं, हमारे घर पे ग्लास की टेबल होती है, उस पे हम करीब 1 kg का पॉट रख देते हैं और वो पॉट उस पे रखा रहता है विदाउट ब्रेकिंग द ग्लास। Because at that time the pot is at rest, its velocity is 0. If its velocity is 0, it means its momentum is also 0. लेकिन आप इमेजिन करिए कि वो पॉट अगर आप थोड़ी ऊपर से ले जाकर उसको ड्रॉप कर दें ग्लास टेबल के ऊपर, then what will happen? The glass will get break. Glass will get break because the object, the moving object will have momentum, and that momentum will exert the force. Yes, that is the right word. The moving object will have momentum, and that momentum will exert the force. We will discuss it deeply. You must note it down. This momentum equals to mass into velocity. It is denoted by symbol p, and it is measured in meter per second. So we discussed that what is the unit of momentum, kg meter per second. Write down some facts related with momentum. Write down facts related with momentum. First point, a 1 kg weight kept on a table, a 1 kg weight kept on a table glass does not break it. A 1 kg weight kept on a table glass does not break it by its weight. But 100-gram weight falling over the same table, 100-gram weight falling over the same table glass will break it. 100-gram weight falling over the same table glass will break it due to its momentum. Due to its momentum. Due to its momentum. आपको ये इमेजिन करना पड़ेगा। मान लीजिए आप मेरे सामने बैठे हैं और अगर आप मैं एक चॉक थ्रो करके आपकी तरफ फेंकता हूं एंड द चॉक गेट स्टिक टू योर चीक, विल यू एक्सर्ट सम फोर्स? विल यू फील सम फोर्स? यस। देखिए जो मूविंग चॉक है उसके पास मास है, उसकी वेलोसिटी भी है, अपने मोमेंटम से वो चल रहा था। जब आप उसके बीच में आए तो सडनली उसका मोमेंटम चेंज हुआ, उसकी वेलोसिटी जीरो पे आ गई। When it comes to zero, its momentum suddenly got changed, and you have to fix in your mind whenever the momentum gets changed, you will feel the force. चलिए और मैं एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए if you are in the car, moving car, and car is going over the smooth road, very smoothly you are enjoying your journey. Suppose that there is one, अगर आप इमेजिन करें कि रोड पे मान लीजिए कोई ब्रेकर आ जाता है and you are moving with the same speed, your car just passes away the breaker, then will you feel some force or not? Certainly. हुआ क्या कि आपका डायरेक्शन ये था, आपकी वेलोसिटी ये थी, जैसे ही आपकी गाड़ी ब्रेकर पे टकराएगी आप स्पीड कम नहीं भी करेंगे, सडनली द फोर्स विल एक्सर्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन एंड योर वेलोसिटी विल सडनली चेंज, इट विल बी रिड्यूस्ड। और वेलोसिटी चेंज हुई तो आपकी वेलोसिटी चेंज हुई, आपका मोमेंटम सडनली चेंज हुआ, एंड व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मोमेंटम यू विल फील द फोर्स। जब भी मोमेंटम चेंज होगा आपको क्या फील होगा? फोर्स फील होगा।
अगर मैं थप्पड़ मार के गाल पे किसी को थप्पड़ मारता हूं तो क्या होता है? फोर्स लगता है। क्यों? द मूविंग हैंड इज हैविंग मास एंड वेलोसिटी, when it is strike with your cheeks, that momentum has been changed. The change in momentum will exert the force. So whenever there is change in momentum, we will feel the force. स्टोन उठा के आप मारेंगे तो उसका मोमेंटम चेंज होगा एंड दैट मोमेंटम विल लेट यू डाउन टू चेंज द फोर्स। इसका अपोजिट भी आपको समझना है। मान लीजिए कोई व्हाट वी डू, वी से दैट एक कार है, किसी पर्टिकुलर स्पीड पे चल रही है। एक कार है जिसका मास 5 kg है। डोंट लाफ ऑन माय कार, एम्बेसडर। A 5 kg car is going with 5 meter per second. Can you give me its momentum? Mass into velocity, sir. Mass 5, velocity 5. Momentum will be 25 kg meter per second. Very good. अगर मैं इस पे रेस प्रेस कर दूं, रेस को प्रेस कर दूं, then its velocity suddenly moves in 10 meter per second. उस टाइम इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। नाउ व्हाट विल बी द मोमेंटम? अगर कार का मोमेंटम भैया 25 से 50 kg मीटर पर सेकंड हो रहा है, मतलब मोमेंटम चेंज हुआ है। और मोमेंटम कब चेंज हुआ है? तब इस पे क्या लगा है? फोर्स। सो यू मस्ट हैव टू रिवाइज, you must have to remember that whenever their force is applied on an object, the momentum gets changed, and as well as whenever there is change in momentum, the object will experience the force. Whenever there is change in momentum, the object will experience the force, or whenever the force is applied on an object, its momentum will get changed. So this is the basic conclusion that we draw regarding the momentum as well as Newton's first law. So what is momentum? Somebody asked. You can say P equals to mv. अगर momentum की डेफिनेशन, momentum ऐसे भी पूछ लिया जाता है, name the physical quantity measured as amount of motion. ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो अमाउंट ऑफ मोशन में मेजर की जाती है? एक वर्ड में आंसर फेंक के देना, मोमेंटम। मेन फिजिकल क्वांटिटी मेजर्ड एज अमाउंट ऑफ मोशन, मोमेंटम। कोई पूछता है व्हाट इज मोमेंटम? P equals to mv. What is P? Momentum. What is P? Momentum. What is P? Momentum. What is the SI unit of momentum? Kg meter per second. So this is the class where we discuss regarding the Newton's first law. Whatever the application of inertia, they all are the application of Newton's first law. अब हम बात करते हैं क्वेश्चन कैसे बनेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा the branch of a tree is vigorously shake, then the trees get detached, that is because of, अगर ये पूछ रहा है because of which inertia, then we will reply it is because of inertia of rest. अगर ये पूछता है because of which law, then we will say it is because of Newton's first law of motion. अगर पैसेंजर बस में खड़े हैं, मूविंग बस, and the moving bus stops suddenly, then they feels a jerk in which direction? They will feel a jerk in forward direction because of inertia of motion. Because of inertia of motion. So this what is the nature of Newton's first law? Newton's first law is qualitative in nature. So it is all about this class where we discuss Newton's first law and its application, inertia and its type, and very important topic, momentum. Momentum is the amount of motion presented in the body. Hope you like this video and you completed your notes. Just complete your notes. Today's interactive class, I will ask you the questions from the session that we have completed in this video. Thank you so much.